খুব ঝামেলা। ঠিক আছে। Okay, we have come to the live. Good evening, everybody. Welcome to this live session of Ispartacus. I am Oritra Roy Bormon, editor of Ispartacus and the host for today's live session. Today we have arranged an online lecture entitled Indian Politics Yesterday and Today, carrying a sub-theme entitled Atangabad or Maulabad, because today's lectures will be conducted in Hindi. In the previous session, we were blessed with the presence of Professor K. Sarkar. Video of the live session will be uploaded to our YouTube channel. For some technical reasons, we failed to upload it. But we hope that the video of that previous live session will be uploaded by tomorrow. And those of you who were not able to join our live session, you all can visit our YouTube channel should you wish to revisit the previous live session. Also, the link of that video will be shared in our Facebook page. For today's session, we have with us Professor Namrata Kothari ma'am. Welcome ma'am to the Ispartacus. Thank you. Dr. Kothari has completed her postdoctorate as fellow in Ramakrishna Mission Institute of Culture in 2021. She has done her postgraduate degree in political science from University of Calcutta and awarded the Doctor of Philosophy from the same university in the capacity of Senior Research Fellow. Currently, she is employed as Assistant Professor and Head of the Department in the Department of Political Science, South Calcutta Girls College. She has delivered lectures in different colleges of Kolkata and as an invited faculty at the university level, delivered lectures in Jadavpur University, Mahatma Gandhi Hindi Antarashtriya Mahavidyalaya, Central University, JS University, and Kolkata Police Law Institute. She has also got the privilege to teach German to the Shromanis of Jain sect. She has also participated and presented research papers in different conferences and seminars in India and abroad, like in Poland, where she appeared as discussion and paper presenter, in Philippines as moderator and paper presenter, and also in China and Bangladesh. She was also invited to deliver lectures in India and abroad, at Boston and American University of Paris, Suffolk University, etc. Her works were published in books and journals of national and international repute. His eminent two monograms are titling Jainism, Emergence and Socio-Political Values, Raja Rammohan Rai, the first Southern soul of modern India, and others. She also appeared in national TV channels as political analyst. And welcome, and I also welcome to ma'am to come in Ispartacus. Just like the other days, to take the interview of Professor Kothari, we are honored again to have with us Professor Pradeep Bosu sir. Professor Bosu is Dean of Arts in Presidency University, Kolkata. He completed his PhD from Center for Studies of Social Science, Kolkata. He published many books on Naxalite movement and post-colonial studies. Among them, some of are postmodernism, Marxism, and postcolonialism, discourses of Naxalite movement, Naxalite politics and post-structuralist, post-colonial and subaltern perspective, and theory, society and politics, and many others. So without further ado, may I request Professor Bosu to start the interview session with Professor Kothari. Sir? First of all, I will thank Ispartacus, its chief editor Shaumo Saha, and its technical editor Oritra Roy Bormon. And I also thank Professor Namrata Kothari. Once she was my student. I am very proud that today she has been my guest. Just one thing, that this is a series. First 25 sessions were about West Bengal politics today, and from 26th session we are conducting the session on India today, India yesterday and today. Under this theme, today's sub-theme is Anekantavad or Maulbad. This is not a party platform. It is an ये कोई पार्टी का मंच नहीं है, ये एकेडमिक डिस्कशन का, डिबेट, डिस्कशन, एनालिसिस का मंच है. तो इससे पहले, before this, the scholars who came,
মইদুল ইসলাম, সঞ্জীব মুখার্জি, দেবী চ্যাটার্জি, শোভনলাল দত্তগুপ্ত, প্রণবকান্তি বসু, কল্যাণ কুমার দাস, রাজর্ষি দাশগুপ্ত, হিমাদ্রি চ্যাটার্জি, বুলা ভদ্র, নিবেদিতা সাহা, প্রিয়াঙ্কা মাথুর, পরিমল ঘোষ, সমীর কুমার দাস, কুণাল চট্টোপাধ্যায়, প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়, শিবাজি প্রতিম বসু, শতাব্দী দাস, অয়ন গুহ, বিরাজলক্ষ্মী ঘোষ, জওহর সরকার, পুনম ভট্টাচার্য, অর্ণব সাহা, অলোক দাস, ঈশিতা সুর, সম্রাট সেনগুপ্ত, সুজয় ঘোষ, রাধাকান্ত বারিক, তনভীর আরশাদ, কাঞ্চন সরকার, and today this is the 30th session. We have Professor Namrata Kothari. आज का थीम है अनेकांतवाद और मौलवाद. Definitely, when we are talking about Maulwad fundamentalism, we here mean religious fundamentalism. तो सबसे पहले मैं पूछना चाहता हूं कि जैन धर्म के अनेकांतवाद ये बहुत फेमस है, दिस डॉक्ट्रिन. तो इसका अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अनेकांतवाद? थैंक यू सर. ये जो शब्द है अनेकांतवाद, इसका मतलब एक से ज्यादा. ये सबसे पहले इस शब्द को जो सबसे पहले यूज करने वाले जो आचार्य थे वो थे सिद्ध सेना दिवाकर. उसके बाद अनेकांत वाद को और भी प्रचार प्रसार जो भी हुआ वो आचार्य श्री हरिभद्र सूरी उनके किताब में रिफ्लेक्ट होता है. वो है अनेकांत जय पताका. ये बुक 8th सेंचुरी में लिखी गई थी हरिभद्र सूरी जी द्वारा और ये एकदम स्टैंडर्ड वर्क है जहां पर अनेकांतवाद का हम लोग बोल सकते हैं एकदम फाउंडेशन को और भी पुख्ता कर दिया गया था और एकदम स्ट्रक्चर्ड वे में इस किताब में हरिभद्र सूरी ने ये अनेकांतवाद को लेके पूरी चर्चा की थी. आगे सेंचुरी हम लोग देखते हैं महावीर. आपने बोला 8th सेंचुरी. 8 705 to 755 AD during that period. तो ये जो अनेकांतवाद उसके बाद से सिद्ध सेना दिवाकर से बाद से जो क्रमगत ये जो स्टार्ट हुआ, उसके पहले महावीर के प्रवचन में भी हम लोग अनेकांतवाद का रिफ्लेक्शन देख सकते हैं. पर अनेकांतवाद ये जो शब्द है ये उस टाइम यूज नहीं हुई थी. ये बाद में जो आचार्य लोग हैं उन लोगों ने अपने लेख में हम लोग अनेकांतवाद ये शब्द का उद्भव पाते हैं. अच्छा, अब ये अनेकांतवाद क्या है? ये एक ऐसा फिलोसॉफिकल थॉट है जो किसी भी रिलीजन में नहीं है. ये एक डिस्टिंक्टिव फिलोसॉफिकल थॉट है जो जैनिज्म में है. इसका मतलब है कि रियलिटी हैज मेनी साइडेडनेस. हम लोग आज जो चीज देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, वो उसका एक पहलू है. एक सत्य के 1000 पहलू होते हैं और एक जब तक हम सारे पहलू को नहीं देख ले तब तक हम लोग वो चीज को ट्रुथ नहीं मान सकते हैं. उसके पहले तक वो पार्शियल रियलिटी रहता है. अगर वो फुल ट्रुथ हम लोग कोई चीज को तभी मानेंगे जब हम लोग उसके जितने भी पर्सपेक्टिव है उसको अगर हम लोग जान ले, पहचान ले, तभी हम लोग ये चीज को मानेंगे. मैं यहाँ पर उमा स्वामी, वन ऑफ द फेमस पॉलिटिकल फिलोसोफर ऑफ जैन थिंकर, उन्होंने इस अनेकांतवाद को 3 शब्दों में व्याख्या किया है. ओरिजिनेशन, डिसअपियरेंस, परमानेंस या क्रिएशन,
सिसेशन एंड परमानेंस, वायुक्ति, लुप्त होना और स्थायित्व। इसको हम लोग एक सहज उदाहरण से समझा सकते हैं। जब हम लोग एक बीज मिट्टी में रोपते हैं तब क्या होता है, कुछ दिन बाद ही हम लोग देखते हैं वो बीज प्रस्फुटित होता है, अपने सेल से बाहर आता है। कुछ दिन बाद धीरे धीरे उसके जो रूट सिस्टम है वो डेवलप्ड होते हैं। जैसे ही रूट सिस्टम डेवलप्ड होता है उसके बाद उसके स्टेम्स, लीव्स, धीरे धीरे फ्लावर्स, फ्रूट, सब कुछ धीरे धीरे आ जाते हैं और फल देने वाला पेड़ या वृक्ष में परिणित होता है। तो ये जो एग्जाम्पल हमें यही रिफ्लेक्ट कराता है कि हर वक्त चेंज हो रहा है, एक सिचुएशन से एक सिचुएशन, एक चेंज के बाद एक चेंज, लेकिन जो बीज है वो लेकिन नहीं मरता है, वो इटर्नल रहता है। जो लाइफ ऑफ द सीड है दैट नेवर डाई, इट लीव्स इवन दो इट इज कंस्टेंटली चेंजिंग, एंड दैट व्हाट इज सत्य। सो और एक यहाँ हम लोग एक एग्जाम्पल देके इस चीज को, एक उदाहरण देके इसको और भी पुख्ता कर सकते हैं। सपोज happiness of one leads to unhappiness to other, and सपोज हम लोग यहाँ पर और एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। एक आदमी जो स्वर्णकार है, जो स्वर्ण की चीजें बनाता है, 3 आदमी उनके पास जाते हैं। तीनों के जो भाव है वो अलग अलग है। अलग अलग है मतलब एक व्यक्ति चाहता है कि वो सोने की क्राउन खरीदे, मुकुट खरीदे। दूसरा व्यक्ति चाहता है कि वो सोने की बैंगल खरीदे या सोने की पॉट खरीदे, और तीसरा व्यक्ति किसी भी फॉर्म में सोना को लेना चाहता है। तो जब वो सोनारकार या गोल्डस्मिथ के पास जाता है तब वो सोनारकार एक घड़े को तोड़ के क्राउन बना रहा होता है उस टाइम। तो जिसको वो क्राउन चाहिए होता है, मुकुट चाहिए होता है, वो बहुत खुश हो जाता है कि हमको ये चीज मिल गया, मैं जो चाह रहा था वो मिल गया। जिसको घड़ा चाहिए था वो दुखी होता है कि नहीं, ये घड़ा तो टूट के अब ये क्राउन में परिणित हो गया, तो अब मुझे ये घड़ा नहीं मिलेगा। और तीसरा जो न्यूट्रल है, जो किसी भी फॉर्म में सोना चाहता है, वो उसी से खुश है। इसीलिए ये अनेकांतवाद ये चीज भी हम लोगों को समझाता है कि एक की खुशी दूसरे की नाखुशी भी हो सकती है, और तीसरा जो है वो न्यूट्रल भी रह सकता है। इसे अगर हम लोग मार्क्स के भाषा में बोले तो ये एक तरह का प्रोसेस है, थीसिस, एंटीथेसिस एंड सिंथेसिस। और अनेकांतवाद ये सिंथेसिस के ऊपर जोर देता है कि हम लोगों को ये दो जो पार्शियल ट्रूथ मिला है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन में जो हम लोग को फाइनल सिंथेसिस मिलेगा, दैट इज अनेकांतवाद, इसको हम लोग बोल सकते हैं। So the Jain conception of reality is different in Indian philosophy. Some will emphasize on change alone. खाली चाहते हैं कि नहीं, बस एक तरफा चीज देख लिए कि नहीं, चेंज हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, यही सत्य है। पर ये सत्य नहीं है, ये आधा सत्य है। This is one-sidedness change or permanence, and this is rejected by Jain thinkers. They consider this system as एकांत, कि हम लोग एक पहलू को देख के उसको हम लोग सत्य मान ले रहे हैं, वो एकांत है। जब तक हम लोग मल्टी साइडेडनेस या मेनी साइडेडनेस ऑफ रियलिटी को परख नहीं ले, तब तक वो चीज सत्य नहीं हो सकता, और वही है अनेकांतवाद। So Jain system of philosophy which maintains that multifarious aspect, that a complete comprehension of such nature must necessarily taken into consideration all the aspects of reality. Hence we call this Jain darshan अनेकांतवाद। मेटाफिजिकली, अगर आध्यात्मिकली हम लोग देखें, अनेकांतवाद का मतलब है द एग्जिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इवन इफ दे आर कंट्राडिक्टरी टू ईच अदर, दैट इज समथिंग कैन को एग्जिस्ट विथ अदर। और अगर हम लोग एपिस्टेमोलॉजिकली देखें, थिंग्स कैन बी मीनिंगफुल विथ मल्टीपल व्यू पॉइंट्स। लाइक हियर वी कैन टेक एन एग्जाम्पल। एक बार एक गौतम गंधर्व, वन ऑफ द फॉलोअर ऑफ महावीरा, वो महावीर जी से प्रश्न करते हैं कि भगवान आप बताइए कि जीव मॉर्टल है कि इमॉर्टल है। महावीर बोलते हैं जीव मॉर्टल भी है, इमॉर्टल भी है। A person is both mortal and immortal, that is and is not, and many such coexist ontologically.
एपिस्टेमोलॉजिकली ये इंस्टेंस हम लोग दे सकते हैं, वी कैन रेफर टू अ टेबल। हम लोग जब एक टेबल को देख के बोलते हैं टेबल है, हम लोग क्या क्या चीज इसका देख सकते हैं। कलर ऑफ द टेबल, एक टेबल को हम लोग टेबल कब बोलेंगे, उसके कलर को देख के, उसके 4 पहिए हैं, वो वुड से बना हुआ है, उसमें जो कारपेंटर है वो मेकर का हाथ है। तो ये सब सारा पहलू को देखने के बाद हम लोग बोलते हैं द टेबल इज अ टेबल, दिस इज अनेकांतवाद। अनेकांतवाद बहुत सारे समस्याओं को सुलझाने की हम लोगों के लाइफ में कोशिश करते हैं, और ये फिलॉसफी कर रहा है, अगर हम लोग सही सही हम लोग अगर इसे अपने जीवन में उतारे तो, बोथ एक्सटर्नली एज वेल एज नॉन एक्सटर्नली, इट कैन को एग्जिस्ट इन द सबस्ट्रेटम। फॉर एग्जाम्पल, वी कैनॉट सेपरेट अ पॉट फ्रॉम क्ले। हम लोग मिट्टी से घड़े को कभी अलग नहीं कर सकते, ये सत्य है। ये हम लोग अगर देखें, दोनों अलग अलग आइडेंटिटी है, एक पॉट है, क्ले है, पर दो बोथ आर इंटर रिलेटेड एंड इंटरडिपेंडेंट। वन कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट द अदर, दिस इज अनेकांतवाद। अनेकांतवाद 3 प्रिंसिपल के ऊपर खड़ा है। नंबर 1, रिलेटिविटी, जिसको हम लोग सापेक्षता बोलते हैं। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल, लाइव एग्जाम्पल ले, द एग्जाम्पल ऑफ द फैक्ट्री ओनर एंड द फैक्ट्री वर्कर, इन दोनों के इंटरेस्ट में फर्क है। इन लोग क्या चाहते हैं, लाइक द इंटरेस्ट ऑफ द फैक्ट्री ओनर एंड द इंटरेस्ट ऑफ द फैक्ट्री वर्कर आर नॉट द सेम। कीपिंग इन माइंड द वर्कर्स particularly productivity increases and the factory owners interest are served. तो और likewise keeping in mind the owners interest, the workers are served. अगर ये दोनों ही अपने अपने इंटरेस्ट में इतने व्यस्त हो जाएं और अपने इंटरेस्ट को इंडिपेंडेंटली करने का कोशिश करें, तो ये हरदम खतरनाक साबित होता है। किसी का भी इंटरेस्ट सर्व नहीं होगा और अल्टीमेटली जो इंडस्ट्री है वो पूरी तरीके से बैठ जाएगा। इसीलिए दोनों के ही जो इंटरेस्ट है वो इंटरडिपेंडेंट है, एक इंटरेस्ट दूसरे इंटरेस्ट को सर्व कर रहा है। दिस इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ अनेकांतवाद। Second principle is coordination, samanvay. It is a principle for unity between two apparent different characteristics of a substance. Characteristics which differ but not altogether different. They are identical too. Reconciliation, जिसे हम लोग मेल मिलाप कहते हैं, can be brought by recognition of the identity principle. सपोज अगर हम इस यूनिवर्स में, अगर हम लोग चाहते हैं कि इस यूनिवर्स में बैलेंस बना रहे, हम लोग इस यूनिवर्स में सही से अपना जीवन यापन कर सके, तो अगर हम लोग ये सोचे, ये प्रीमाइस में अगर हम लोग बेस करके सोचे कि आई अलोन एग्जिस्ट, अगर हम लोग ये सोचे तो कभी ये यूनिवर्स में बैलेंस सिस्टम मेंटेन नहीं हो सकता है। अगर इस यूनिवर्स में हम लोग को सर्वाइव करना है, बैलेंस सिस्टम मेंटेन करना है, तो हम लोगों को क्या प्रिंसिपल एडहर करना चाहिए, बिसाइड मी अदर्स ऑल्सो एग्जिस्ट एंड वी आर इंटर रिलेटेड। हम तो हैं ही हैं, हमारे साथ और भी हैं, और हम लोग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर यही है, दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ कोऑर्डिनेशन, वी आर नॉट अलोन, others exist beside us. The third important principle is coexistence. Anybody or any existence must have opposite. And the holiness of the world religion has been destroyed by the view that only those who have the right to survive, who follow my religion, and rest should be destroyed. ये जो हम लोग की जो सोच है, जब हम लोग रिलीजियन को लेके सोचते हैं, हम लोग क्या सोचते हैं, हमारा ही रिलीजियन सर्वोपरि है, बाकी सब बेकार है, इसीलिए बाकी सबको डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए। ये अनेकांतवाद पूरी तरह से इस चीज को रिजेक्ट करता है कि नो, मेन स्ट्रेंथ ऑफ रिलीजियन क्या है, नॉन वायलेंस, अहिंसा, बंधुत्व, फ्रेंडलीनेस, फ्रेटर्निटी। अगर हम लोग ये एब्सोल्यूटिस्ट व्यू अगर अपना लें, तब क्या होगा, नॉन वायलेंस विल चेंज टू वायलेंस, दिस फ्रेंडलीनेस विल चेंज इनटू हॉस्टिलिटी एंड द फ्रेटर्निटी इनटू एमिनोसिटी। सो it implies the tolerance and freedom of thought,
will only be possible with the non-absolutistic view. So अनेकांतवाद में हम लोग एग्रीमेंट के साथ साथ डिफरेंस, ये दोनों ही हम लोग इस कंसेप्ट में पाते हैं. दे आर मीनिंगफुली को एग्जिस्ट, एग्रीमेंट के साथ डिफरेंसेस. सो इट इज अ फिलॉसफी ऑफ पॉलीलॉग एंड द मेथड ऑफ इंटरफेथ डेलिब्रेशन. अगर हम लोग एक छोटी सी यहाँ पर एक शब्द हम लोग सब जानते हैं, 3 वर्ड की ये जो शब्द है, सत्यम शिवम सुंदरम. सत्यम क्या है? ट्रुथ. शिवम क्या है? बेनिफैक्शन. एंड सुंदरम क्या है? ब्यूटी. सो इस प्रिंसिपल में हम लोग क्या देखते हैं? यूनिटी इन डाइवर्सिटी एंड डाइवर्सिटी इन यूनिटी. दिस इज अनेकांतवाद. आचार्य महाप्रज्ञा जी अपने बुक में उनके बुक का नाम है अनेकांत द थर्ड आई. उन्होंने कहा है that our life is based on opposing pairs. हम लोग जो इस वर्ल्ड में जो अपना जीवन यापन करते हैं, हम लोग सब समय एक ऑपोजिट पेयर, अपने ऑपोजिट पेयर के साथ हम लोगों का हर दिन सामना होता है. वो कैसे? बिकॉज अनेकांत का एक ही रूल है, को एग्जिस्टेंस ऑफ ऑपोजिट्स. नॉट ओनली एग्जिस्टेंस इन पेयर्स, दे हैव टू ऑपोजिट पेयर्स. और ये इसी चीज से पूरा यूनिवर्स चलता है. कैसे? इफ देयर इज अ विजडम, देयर इज ignorance. If there is a vision, there is a lack of it. If there is a happiness, there is sadness. If there is death, there is a life. So हर समय हम लोग देख रहे हैं this opposing pair coexist, without which this universe will not run, and we are not here. So ये जो अनेकांतवाद, जो टॉलरेंस, जो सहनशीलता को प्रमोट करता है, जो सहनशीलता के ऊपर जोर देता है, ये हम लोग जैन के पर्युषण पर्व से हम लोग को ये शिक्षा मिलती है. और ये एकदम राइट एग्जाम्पल ऑफ अनेकांतवाद, जिसमें बोला जाता है खमामी सव्य जीवे खमंतु में. आई पार्डन ऑल द एनिमल्स, लेट ऑल एनिमल्स पार्डन मी. आई हैव फ्रेंडशिप with all the animals and I have no enmity with anybody. तो अगर ये हम लोग अपने जीवन में उतार ले तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा. सो लॉर्ड महावीर रिजेक्ट करते हैं दोनों ही प्रोपोजिशन. क्या? एवरीथिंग एग्जिस्ट एंड नथिंग एग्जिस्ट. ही प्रपोज सिंथेसिस बिटवीन दीज टू. इसको हम लोग सहज एग्जाम्पल से व्याख्या कर सकते हैं. अगर हम लोग किसी पानी में, कहीं पर तालाब में कहीं भी एक पत्थर मारते हैं तो क्या होता है? पत्थर मारने से ही वो वाटर में हम लोग रिपल, वो वाइब्रेशन, वो वेव्स देख सकते हैं. अगर वहां पॉन्ड नहीं होता, हम लोग ये वेव्स नहीं देख सकते. इसका मतलब क्या हुआ? वाटर इन रिपल्स एंड रिपल्स इन वाटर, दे आर इंटरडिपेंडेंट विद ईच अदर एंड दे कैन नॉट लिव इंडिपेंडेंटली विदाउट ईच अदर. दिस इज द लाइव एग्जाम्पल ऑफ अवर life. So this is Anekantavad in Jainism. Thank you, Namrata, for your lucid explanation and elaboration. आप तो बहुत अच्छे एक्सप्लेन किए हैं. और मेरा जो लगता है ये जो पोस्ट मॉडर्न थॉट, there is some similarity between अनेकांतवाद और उत्तराधुनिकता. यस. मेरा नेक्स्ट सवाल है कि जैन धर्म के अनेकांतवाद और हिंदू धर्म के वैदिक दर्शन में क्या फर्क है, क्या अंतर है? पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगी सर, हिंदू रिलीजन इज अ वास्ट रिलीजन and comparing it with Anekanta itself is not apt. But still, I would like to explain it in this way. Hindu philosophical knowledge is principally based on metaphysics, that is, based on the law of contradiction. And Anekantavad denies this law of contradiction either as a law of thought or law of things. This is the first difference. Second, Anekantavad asserts that no viewpoint is to be taken final. Definitely, the viewpoint
we will take that reality when we will judge its multi-sidedness, otherwise not. Therein lies the strength and the divergence from other pluralistic position, which tends to focus on this epistemology alone. Although Anekantavad does not have this epistemological component, especially in relation with the Sayadvad, which means the doctrine of maybe, which states that the truth prediction on one conditions or context, but it supports pluralism, which is bolstered by its metaphysical contention that reality itself is not singular. सो यहाँ तक ठीक है, जहां तक ये जो हिंदू और या वैदिक रिलीजियन के साथ जहां पर अनेकांतवाद के जो पार्थक्य को आप जानना चाह रहे हैं, प्लुरलिज्म ऐसा नहीं है, हिंदू रिलीजियन में नहीं है, वैदिक हिंदुइज्म में नहीं है. अगर प्लुरलिज्म नहीं रहता तो इस धरती में जो इतने लोग आए और यहाँ पर आके रह गए, एसिमिलेट हो गए, तो ये कभी नहीं होता. पर यहाँ पर एक डिफरेंस है. वो क्या? ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म के साथ अनेकांतवाद का डिफरेंस. जब with the evolution of the we can say the religion or our culture, धीरे धीरे जब वैदिक रिलीजियन से हम लोग धीरे धीरे ब्राह्मणिकल रिलीजियन में जब हम लोग आए, तब हम लोगों ने देखा कि ये जो ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म है, इसमें प्लूरलिज्म नहीं है. देयर इज अ एब्सेंस ऑफ प्लूरलिज्म इन ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म बिकॉज इट इज डॉगमेटिक, इट इज नॉन लीनियर एंड नॉन लिबरल. बिकॉज फॉर देम ब्रह्मा ही सत्य है और वर्ल्ड बोल के कुछ नहीं है, वर्ल्ड इज अनरियल. इसका मतलब क्या? वो अपने एक ही चीज में स्ट्रेस दे रहे हैं कि ब्रह्मा सब कुछ है, बाकी जो रिलीजन, जो धर्म, जो जैसा बोल रहे हैं सब कुछ असत्य है, वही फाइनल है. यहाँ पर अनेकांतवाद से ये ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म का डिफरेंस है. यहाँ पर अनेकांतवाद प्लूरलिस्टिक व्यू रखता है, पर ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म यहाँ एकांतिक दृष्टि रखता है, जहां पर बोल रहे हम लोग ये क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं कि हमारा ही ब्रह्म सब कुछ है, ब्रह्म के आगे कुछ नहीं है, बाकी सब असत्य है. सो we will see that the aim of the pluralism and relativism is to give permission to diversity and differences, to see in other diverse signs our divinity. Anekanta goes beyond this. It does not merely give permission to diversity, it mandates an encounter with it. It is only through the exposure of other way of beings will a fuller picture of the reality emerge. अनेकांतवाद इस चीज को पूरी तरह इसको नेगेटिविटी में ही नहीं ले जा रहा है, बल्कि इसको कन्फ्रंट कर रहा है कि नहीं, ये ठीक नहीं है. अगर इस तरह से अगर हम लोग सोचे देखें तो हम लोग जिस समाज में रह रहे हैं, जिस सोसाइटी में रह रहे हैं, वो कभी ठीक तरह से डेवलप नहीं हो सकता. ह्यूमैनिटी कभी ठीक तरह से डेवलप नहीं हो सकता. लव, कंपैशन, जो हम लोग लव, कंपैशन, अहिंसा की बातें करते हैं, वो कभी उस सोसाइटी में स्टैब्लिश नहीं हो सकता, क्योंकि अनेकांतवाद इज द अदर नेम ऑफ अहिंसा ऑल्सो. अगर हम लोग इस प्लूरलिस्टिक अप्रोच को अडेप्ट कर लेंगे तो हम लोग में जो सहनशीलता है, जो टॉलरेंस की जो कैपेसिटी है, वो और बढ़ेगी. और सब विवाद की मूल जड़ ही है ये हम लोग जो टॉलरेंस की जो कमियां हैं हमारे अंदर, इस कारण से ही सब तरह की ये विवादें शुरू होती हैं. सो अगर हम लोग देखें, इवन द सनातन हिंदुइज्म which is profited by Manu Samhita is opposed by Anekantavad, because the former has its own rules and regulation, and अगर कोई भी उसके अगेंस्ट में जाए तो वो क्या बोलेंगे कि नो, ये बहुत बड़ा पाप है, ये हमारे अगेंस्ट में जा रहा है, इसका मतलब ये गॉड के अगेंस्ट में जा रहे हैं. सो अनेकांतवाद oppose this thing also. So Hinduism as we know is a way of life, and it has many sects. Up till this point, इतना तक we can say कि Hinduism has pluralistic approach, but difference of opinion among them and non-acceptance of others' views give rise to fundamentalism. जब तक हिंदुइज्म में बहुत सारे सेक्ट हैं,
सब रह रहे हैं साथ में, यहाँ तक ठीक है। जहां से हिंदुइज्म ये क्लेम करना चालू कर देता है कि हमारा ही रिलीजन सर्वोपरि है, हम लोग जो बोल रहे हैं वही सही है और इसका कोई उल्लंघन करे तो वो पाप है, ये चीज ही इस मौलवाद या फंडामेंटलिज्म को बढ़ने में सहायता करता है और वो सोसाइटी के लिए, मानववादी के लिए, मानवता के लिए कभी सही नहीं होता है। सो ये जो फंडामेंटलिस्ट है वो अपने ही टीचिंग्स प्रीचिंग्स को बहुत ज्यादा अपील्ड करने का कोशिश करते हैं, दिस गोज अगेंस्ट अनिकांतवाद। बट among Jain sects, both Digambar and Swetambar, they agreed on this point of pluralism, that is the tolerant attitudes towards other viewpoints. This is the most important thing which distinguishes this Brahminical Hinduism with Anikantavad. Excellent. You have real clarity. Thank you very much. Now, हम थोड़ा हमारे भारतवर्ष को और देखना चाहता हूँ। आज तो हर किस्म के मौलवाद, धार्मिक मौलवाद हमारे देश में और दुनिया में अभी इतना शक्तिशाली, इतना पावरफुल बन चुके हैं। हम देखते हैं कि तालिबान है अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट है, मौलवादी, और हमारे टेररिस्ट है। तो अभी मेरा पूछना है कि भारतवर्ष में धार्मिक मौलवाद, जो मजहबी मौलवाद, इसके उत्पत्ति का मूल कारण क्या है? What are the basic reasons, main reasons or roots for the origin of fundamentalism, religious fundamentalism in our country? किन कारणों से भारतवर्ष में धार्मिक मौलवाद इतना ज्यादा, इतना बढ़ावा मिला, इतना पावरफुल बन चुके हैं? थोड़ा दिस साइड प्लीज एक्सप्लेन। यस सर, अगर ये बोलने से पहले मैं ये बोलना चाहूंगी कि फंडामेंटलिज्म ये क्या चीज है। फंडामेंटलिज्म इज नॉट स्ट्रिक्टली रिलीजियस फेनोमेना। इसे हम लोग कोई धार्मिक घटना का रूप नहीं दे सकते हैं, क्योंकि धर्म कभी हम लोगों को फंडामेंटलिज्म नहीं सिखाता है, बट rather a specific way of thinking and understanding of world by a particular people, by a particular group of people, by a particular group in the community. So it helps to restore a sense of security and commitment within one's own group and generating high social control. This is fundamentalism. अब इसके जो कारण हैं, वो सबसे जो मूल कारण है, कई कारणों में से जो मूल कारण है वो है द क्लेम ऑफ एन एब्सोल्यूट ट्रूथ दैट क्रिएट्स इंटॉलरेंस। ये जो क्लेम है कि हम लोग, हमारा रिलीजियन, हम लोग जो धर्म को फॉलो करते हैं वही सत्य है, बाकी सब असत्य है। जो हमारा धर्म जो बोल रहा है, चाहे वो हिंदुइज्म हो, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी हो, जितने भी मेजर रिलीजियन है सब में फंडामेंटलिज्म है। आज अगर हम लोग खाली ये बोले कि इस्लाम फंडामेंटलिस्ट है, हिंदू फंडामेंटलिस्ट है, क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट है, नहीं, कोई एक को हम लोग चिन्हित नहीं कर सकते। जो कोई भी रिलीजन अगर बोले मेरा रिलीजन सर्वोपरि है, इसके बाहर कुछ नहीं है, वो फंडामेंटलिज्म है। जहां पर आप दूसरे के व्यू पॉइंट को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, यही इंटॉलरेंस को बढ़ावा देता है। हम लोग जब तक दूसरे को अपने अंदर नहीं समाएंगे, तब तक हम लोग कभी ये फंडामेंटलिज्म के
ये जो एक फंडामेंटलिज्म का जो फिनोमेना है, ये इससे हम लोग कभी निकल नहीं पाएंगे. सेकेंड रीजन ऑफ दिस ग्रोइंग फंडामेंटलिज्म, एंट्री ऑफ पॉलिटिक्स इनटू रिलीजन. हम लोग अगर ओवर द इयर्स अगर हिस्ट्री हम लोग देखें, ओवर द इयर्स अगर हम लोग प्री ब्रिटिश पीरियड को भी अगर हम लोग पकड़े, या ब्रिटिश पीरियड को भी हम लोग ब्रिटिश पीरियड से ही पकड़े तो समझने में आसानी होगी. हम लोग देखेंगे कि उस समय भी ब्रिटिशर्स लोगों ने क्या किया, रिलीजन बेसिस में डिवीजन करके, विभाजन करके, ये फंडामेंटलिज्म का ये हवा तैयार करके, डिवाइड एंड रूल करके अपने रूल को और भी ज्यादा मजबूत करने की जो कोशिश है, उन्होंने ये चीज बार बार किया और उसमें वो लोग सफल भी हुए. तो वहां से जो शुरुआत हुई ये थमी नहीं. ये हम लोग भारतवर्ष जो इतना गर्व से बोलते हैं कि हम लोग सेक्युलर स्टेट है, ये है, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी हम लोग देखते हैं ये जो फंडामेंटलिज्म का ये जो बीज है, ये जो डिवीजन है, ये जो ब्रिटिशर्स लोगों ने जो रोका था वो आज तक चला आ रहा है. पॉलिटिक्स में रिलीजन का घुसना ये उसका रूप और भी प्रचंड कर दिया है. आज कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो, मेजर माइनर, सब इस चीज को यूज करना चाहते हैं. कोई हिंदुइज्म को बढ़ावा देके, हिंदू तत्व को बढ़ावा देके, कोई इस्लामिक तत्व को बढ़ावा देके. दोनों ही फंडामेंटलिज्म है. हम लोग एक चीज को फंडामेंटलिज्म नहीं बोल सकते. हम हिंदू है तो हम बोलेंगे नहीं जो मुस्लिम्स लोग कर रहे हैं, जो इस्लाम जो फॉलो कर रहा है वो फंडामेंटलिस्ट है. जो इस्लाम जो फॉलो कर रहे हैं वो बोलेंगे नहीं हिंदू जो इन लोग फॉलो कर रहे हैं ये नहीं. दोनों ही फंडामेंटलिज्म है. क्यों? क्योंकि दोनों को टॉलरेट नहीं कर रहे हैं. अगर जहां टॉलरेंस नहीं होगा वहीं फंडामेंटलिज्म का उपज होगा. सो ये जो वोट बैंक के चक्कर में कोई पार्टी मुस्लिम कम्युनिटी को यूज कर रहा है, कोई हिंदुत्व को प्रमोट कर रहा है, ये दोनों ही फंडामेंटलिज्म है. और जिन लोग यहाँ पर, जैसे हम लोग जानते हैं मेजॉरिटी हिंदुइज्म का है इन भारत में और माइनॉरिटी है मुस्लिम. तो यहाँ पर जो मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट हैं, दे आर able to prevent this positive change by labeling it as an quote unquote mark on our religion. And they leave women in the face of triple talaq, parda, polygamy, and several other forms of injustice. So this fundamentalist forces in all the communities, though they are engaging in fighting with each other for political gains, they are united in their patriarchal attitudes towards women. जितने भी फंडामेंटलिस्ट है, जितने भी मौलवाद है, सब कोई नारी वमन सेक्शन को ही टारगेट करते हैं. उन लोगों को कमजोर सोचते हैं. कमजोर सोच के जितना भी फंडामेंटलिस्ट स्ट्रैटेजीज है वहीं से शुरू होता है. कैसे? वो इस तरह से उन लोग सोचते हैं कि अगर हम लोग किसी भी कौम के महिला के ऊपर टॉर्चर करेंगे तो उस कौम के ऊपर दबाव पड़ेगा. क्योंकि महिलाएं आज तक the women are the symbol of honor, we are the symbol of the family, we are the symbol of the community. अगर उसको किसी तरह चोट पहुंचाए तो हमारा फंडामेंटलिस्ट स्ट्रैटेजी सर्व होगा. तो ये भी एक कारण है फंडामेंटलिज्म जो इतना गहरा छाप हम लोगों के दिमाग में, सोसाइटी में, हर जगह फैला हुआ है. इवन अभी जो ये चल रहा है अफगानिस्तान में, ये दिस इज द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ फंडामेंटलिज्म, जहां पर नारियों का शोषण हो रहा है, जहां उन्हें स्कूल जाने से रोका जा रहा है, जहां उनके सारे जो गतिविधियां को रेस्ट्रिक्टेड कर दिया है. वो क्रिकेट नहीं खेल सकती, वो बाहर बिना पर्दा के नहीं जा सकती, वो पढ़ाई लिखाई आगे हायर स्टडीज नहीं कर सकती. तो ये क्या है? सो रिलीजन is an instrument of power struggle, and this is very well used by this fundamentalist people. So the concept that our religion is the super religion, and this problem of marketing to spread it and establish it as a popular religion, make these people fundamentalist. See, जब इस्लाम जब स्थापित हुआ, जब नया नया आया अगेंस्ट द क्रिश्चियनिटी, तब दैट इज अ न्यू रिलीजन. और
उस रिलीजन को स्थापित करने के लिए उन लोगों को क्वेश्चन या फोर्स का अप्लाई करना पड़ा, अदरवाइज उन लोग स्थापित नहीं कर सकते। तो फंडामेंटलिज्म स्टार्टिंग से ही हम लोग देख रहे हैं इस्लाम में देखा जा रहा है। बट अगर हम लोग इस फिलॉसफी को फॉलो करें कि नहीं, हम लोग एक दूसरे की बात सुनेंगे, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता रखेंगे, तब ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है, पर ये ऐसा नहीं है। एज अ रिजल्ट ये जो रिलीजियस फिलॉसफी है वो बैक सीट ले लिया, और इसके बदले क्या ग्रोथ हुआ, किसका ग्रोथ हुआ? मटेरियलिज्म का। और जहां पर मटेरियलिज्म का ग्रोथ हुआ वहीं से फंडामेंटलिज्म भी स्टैब्लिश्ड हो गया। सो विद द इंटरप्रिटेशन of a changing truth as an unchanging truth, fundamentalism came into being, and the projection of the woman as a weaker section, and their dharma is the eternal truth. This led to the emergence of fundamentalism. As we know, we are living in a globalized world today, which is fast in the modern concept, fast developing economically. It is growing day by day. We have a population more than 1 billion, and we claim that one of the largest democracy. We are claiming that. Yet, it continues to experience a new level of conflicts along the lines of caste, class, gender, religion, language, ethnicity, sexual orientation. So this complex history of this communal conflict and coexistence among these identity groups and their interaction with patriarchy has resulted in a variety of contradiction and paradoxes. So अगर हम लोग देखें in this multi-religious context में, fundamentalism of all kinds thrive on one another actions and reactions, and it spread the communal ideology and violence, which is an important fundamental strategy. फंडामेंटलिज्म तभी सरवाइव करेगा एक स्टेट में जब वायलेंस और कम्युनलिज्म को बढ़ावा मिलेगा। अगर ये चीज नहीं रहे तो फंडामेंटलिज्म को कभी बढ़ावा नहीं मिल सकता है। सो एज वी नो, in India we have Hindu majority which constitute 83%, and Muslim as the largest minority group which constitute 13%. So this majority minority, this fundamentalism and communalism are equally dangerous for the people and at large, and particularly for the women. Yet those who are the majority, through their own nationalist ideology and popular mobilization towards the establishment of Hindu nation, they want to create an additional threat, which we call an Indian variant of fascism. So this religious fundamentalism, they are actually using the religion along with the culture, with the caste, ethnicity, and with the nationalism to satisfy their political goals. उन लोग ये फंडामेंटलिज्म को रिलीजन के अंदर, कास्ट के अंदर सब चीज में घोल देना चाहते हैं। किस लिए? ताकि उन लोग अपने स्वार्थ को पूरा कर सके। वो क्या है? राजनीतिक स्वार्थ। सो दिस रिलीजियस फंडामेंटलिज्म जो है वो खाली लोगों के बीच में घृणा फैलाता है, इंटॉलरेंस फैलाता है टुवर्ड्स अदर रिलीजन, और जो इन चीजों में विश्वास नहीं करता है वो क्या करते हैं, या तो वहां से हट जाते हैं, या उन लोगों को एक लेवल दे दिया जाता है कि ये लोग हम लोगों के धर्म के विरुद्ध आचरण कर रहा है, इसीलिए ये अधार्मिक है। सो ये जो कंट्रोल करने का, मनुष्य आदमी को कंट्रोल करने का तरीका रिलीजन के थ्रू, ये है फंडामेंटलिस्ट स्ट्रेटेजी। क्योंकि एक फियर साइकोलॉजी सबके मन में काम करता है, फियर फॉर द फियर साइकोलॉजी फॉर द रिलीजन, कि नहीं अगर हम लोग ये काम नहीं करें ये धार्मिक होगा, हमें पाप लगेगा। इस चक्कर में कई लोग इस फंडामेंटलिस्ट के ये जो जाल में कैप्चर हो जाते हैं, या जाल में अपना पैर दे देते हैं। सो presenting threat to others, and religious fundamentalism actually it mustered the consent of the masses and sometimes offer short-term power sharing arrangements to marginalized groups. So they spread also misinformation about the golden age of the past, but use this modern technology and management methods to achieve their political goals. So in their
autocratic, patriarchal ideology and methods, they pose a great threat to our democracy and women's rights in particular. Because women are the central to these religious fundamental strategies. As I have already told, women played a dual role of the reproducer of the community and as a symbol of family and honor of the community. So this religious fundamentalists actually try to control the mobility of the woman. कि अगर उन लोग वोमन महिलाओं को के पैरों में अगर बेड़ियां डाल देंगे तो उन लोग बाकी रिलीजन को, उनके अपोनेंट रिलीजन को दबा सकते हैं. इस थिंकिंग के द्वारा उन लोग अफेक्टेड होके क्या करते हैं, नारियों पे अत्याचार, रेप, तरह तरह के कुसंस्कार डाल देते हैं जिससे एक समाज में नारी का अस्तित्व खत्म हो जाए. सो दिस इज पैट्रियार्कल फंडामेंटलिज्म. सो फंडामेंटलिज्म ये जो फोर्स है, फंडामेंटलिस्ट जो फोर्स है, वो माइनॉरिटी मेजॉरिटी कम्युनिटी दोनों में ही निहित है. लाइक मुस्लिम माइनॉरिटी अगर हम लोग बात करें, इनमें क्या क्या फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस है, लाइक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमायत इस्लाम हिंद, और भी वेरियस लोकल रिलीजियस लीडर्स, and some of these groups, they are even receive financial support from outside the country or from the other foreign countries. In a book well written by Clark titled Competing Fundamentalism, he raised very pertinent questions in this regard. He said, why do some groups and individuals seek to do harm in the name of God? क्यों कुछ चंद लोग भगवान का नाम लेके दूसरे लोगों को क्यों हार्म पहुंचाना चाहते हैं? Why? While the studies came to hold that the key to this frightening phenomena, they seldom account for the crucial role that religious convictions plays, not just in radical Islam, but also the fundamentalist branches of the worlds of other religions, namely Christianity and Hinduism. He further argues this force of globalization actually, this fuel the aggregation of these movements to produce the completing feature of religious fundamentalism, which have more in common with their counterparts across the religious lines. And they do it with the members of their own religion. He proposes ways to de-escalate this religious violence, and the way is the service of peacemaking. हम लोग इस फंडामेंटलिज्म को किस तरह, इस खराब चीज को हम लोग अच्छाई में बदल सकते हैं, उसका एक ही रास्ता है, दैट इज पीस मेकिंग, शांति से, शांतिपूर्वक से. और एक I came across with one of the very interesting book on fundamentalism. Its name is Mistaken Modernity, India Between Worlds by Dipankar Gupta. He contains that this India's fascinations with Western gadgetaries and lifestyle, which has not brought modernity. हम लोग आज जो पाश्चात्य से इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो गए हैं, हम लोगों का जो कल्चर है, हेरिटेज है, इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज इट्सेल्फ वेरी रिच, बट वी आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, इन द नेम ऑफ मॉडर्निटी, हम लोग विदेशी जो टेक्नोलॉजी है या उनके जो लाइफस्टाइल है, जो गैजेटरी है, उनसे हम लोग इन्फ्लुएंस होके हम लोगों के सोसाइटी में एक नया क्लास का निर्माण हुआ है, दैट इज द अपर मिडिल क्लास, हम लोग इसको बोल सकते हैं. वो इन द गर्व ऑफ दिस मॉडर्निटी अपना जो ट्रेडिशनल जो सुपरस्टिशन है उसको छुपाना चाहते हैं, which is not right. And he very beautifully explained this thing, कि how with this also fundamentalism grow inside the society and in the mentality of the people. Actually, it is a way of thinking. Another very important book by Tariq Ali, the name of the book is The Class of Fundamentalism, Crusades, Jihad and Modernity. In this book, he explained how this aerial attack on the Pentagon and the World Trade Center, this global, the spectacle, this of unprecedented dimension, which generate a volume of, commentary. ये जो थिंकिंग था कि बिफोर
ये 9/11 अटैक के पहले कि अमेरिका को कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई अमेरिका के अगेंस्ट में नहीं जा सकता, ये एक सुपर पावर है, इसके अगेंस्ट में किसी की जाने की हिम्मत नहीं है, कोई इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता। ये जो थिंकिंग है, ये फर्स्ट सिंस 1812 से जो ये चालू हुआ, बहुत सारे जो स्कॉलर्स है ये चीज पे विश्वास करते हैं। ये with the attack of 9/11, it became a turning point. And in the 21st century, once greeted this triumphantly as a marking dawn of this worldwide neoliberal civilization, suddenly became menaced. So the choice presented for the White House and its supporters was to stand shoulder to shoulder against this terrorism. And the writer, very well literally, he challenges these assumptions, arguing instead we have experienced this history in a horrific form, with religious symbols playing a part on both sides. ये आमतौर पर कि हाँ टेररिस्ट अटैक हुआ, ये बहुत निंदनीय है, इसमें स्टेप्स लेना चाहिए, सब चीज सही है। कभी भी हम लोग कभी ये चीज की सराहना नहीं कर सकते जहां आम आदमी की जान चली जाए, और इसमें हजारों लोग मारे गए, 3,500-4 हजार लोग मारे गए थे, इसको हम लोग कभी सराह नहीं सकते। ये बहुत निंदनीय घटना थी। पर ये घटना के बाद क्या चाहिए था, हम लोगों को इसको और बढ़ावा देना चाहिए था कि इसको रिवर्ट, हम लोग को बैक सीट लेके पीस प्रोसेस में जाना चाहिए था, पीस टॉक करना चाहिए था, जो ये होना चाहिए था, पर ये नहीं हुआ। हुआ क्या, तारिक अली बोलते हैं कि बोथ साइड, बोथ इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एंड क्रिश्चियन फंडामेंटलिस्ट, उन्होंने क्या किया, वेस्टर्न पीपल दे सेड गॉड इज ऑन आवर साइड एंड गॉड ब्लेस अमेरिका, और इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट लोगों ने क्या कहा, अल्लाह रिवेंज। So this visible violence of September 11 was the responsible for the invisible violence that has been inflicted on the countries like Afghanistan, Pakistan, Iraq, Saudi Arabia, Egypt, Palestine, and Chechnya. So some of this has been very direct responsibility of the United States and Russia. So this book provides an explanation for both the rise of the Islamic fundamentalism and a new form of Western colonialism. He even argues many of the values claimed by the Enlightenment retain their relevance, while portrayals of the American empire as a new emancipatory project are misguided. Another very important book written by Jyotirmay Sharma, the book named Hindutva, exploring the idea of Hindu nationalism. There he explained the upsurge of militant Hindu nationalism in the recent past, which has brought forth the question of हिंदू कौन है, हु इज हिंदू, व्हाट इज हिंदुइज्म, हिंदुइज्म क्या है, व्हाट इज हिंदुत्व, एंड व्हाट हिंदुइज्म मीन टू हिंदू। इफ हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ, अगर हम लोग मानते हैं हिंदुत्व इज अ वे ऑफ लाइफ है, तो इसके फॉलोअर कौन है, हु आर द फॉलोअर्स, एंड फॉर दोज हु आर, हाउ नेसेसरी इट इज दैट द प्रैक्टिस शुड प्रिवेल अपॉन ऑल अदर्स। These questions are very relevant in today's India. अगर हम लोग मानते हैं हम लोग हिंदू हैं, हम लोग हिंदुत्व को फॉलो करते हैं, तो हिंदुत्व कर फॉलो करते हैं तो हिंदुइज्म क्या है, हिंदू कौन है, कौन इनके अनुयायी है, अगर इनके अनुयायी इस चीज को फॉलो करते हैं तो ये क्या जरूरी है वो इस चीज को फॉलो कर रहे हैं तो दूसरे पे ये फोर्सफुली ये प्रभाव डालने का कोशिश करे कि आप लोगों को भी ये फॉलो करना पड़ेगा। ये कहाँ की ये रीति है। आज हम लोग इंडिविजुअल हैं, हमारे इंडिविजुअल थिंकिंग है, हम लोग अपने विवेचना से, अपने समझदारी से हम लोग क्या करेंगे, किस चीज को फॉलो करेंगे, वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। हम लोग किसी के प्रभाव में आके, किसी के डर से हम लोग कोई चीज फॉलो नहीं कर सकते हैं। दैट इज नॉट द ट्रू रिलीजन, दैट इज फंडामेंटलिज्म। सो दिस इज वी कैन से, I can also cite another very important example. Like in Quran, we find liberal attitude too, where we find the talks of women emancipation, where women was upheld. So, but the element of patriarchy is very evident in Islam and also in different countries. But in spite of that, we have in Muslim countries the women leadership. Like in Bangladesh, we have Sheikh Hasina.
Benazir Bhutto we have previously in Pakistan. But in the name of this Shariat law, which was actually is the analysis of the Quran by this clergyman, and they अपने सुविधा के अनुसार इसको तोड़ मरोड़ के कुरान को जो इंटरप्रेट करते हैं, जिससे क्या होता है उनके शासन करने में उसे उन्हें जो वो दे वांट टू ग्रैब द पावर, and for grabbing the power they use this, you know, they use this Shariat law. That is, they, according to their own wish, they interpret the Quran. This is the Shariat law, where in the name of the God they want to control the power. So because it is easier to explain Islam through Shariat, which is not a religion. We should understand that the Shariat law is not a religion, and it make them easier to grab the power and to spread out their fundamentalist attitude. But if we study the real Quran, we will see Hazrat Muhammad spoke of education of women and their liberty. So this is the actual Quran, which was misinterpreted by these people. Even we take example of RSS, where the power and religion, they club together. A person is a head of the state and also the head of the religion. So it is a political, I will use this term, this is a political religion or politicization of religion. Similarly, Taliban, Al-Qaeda all spoke of spreading the humanity, but their actual intention is grabbing the is the capture of power, grabbing the power, which is very evident in case of Afghanistan. And this fundamentalist Islam is not a true religion, so also this fundamentalist Hinduism is not a true religion. Therefore, we can say that if we spoke of Hinduism, it much stands on these four pillars: this karma, samsara, jnana, and mukti. This is the Hindu way of life. But we will see that RSS protests this Sanatan Hindu Dharma, that is the Hindu religion which runs through this Manusmriti, where Brahmanism was upheld, and RSS picked this from this Manusmriti, where they rejected the claims of historians also about the Indus Valley civilization, that this civilization was developed in Gujarat, in Dwarika, in Arabian, in the Kutch, in the Arabian Sea, and now it is under the water in Gujarat. So this sort of religion, distorted religion, it actually creates fear psychology in the minds of the people, because it creates only due to ignorance, the darkness in our mind, and these people take advantage of this darkness or the less knowledge of a people. So the religions, because they have some myths which attracted the people very much, and this has very much established in the Sanatan religion, and Hinduism is also is not an exception. It has attracted through this, this myth and all this stuff. So this darkness leads to no knowledge. As we know, Sankaracharya once said, even if we are not aware of the knowledge, what is knowledge, even we will see a string, we will thought that it is a snake. So we should come to the light. We should gain knowledge so that we can get rid of this, this fundamentalist attitude of all the majority community or minority community, because darkness is inside us and these people take advantage of this darkness. So we know that the Hindu religion is a liberal religion, Vedic Hindu religion, I will say, but everybody is Hindu. If they follow this, it's a liberal religion, and this, then the few groups of people, they are more interested to win the election, then their purpose will be fortified. For that, they create this division between this Hindu and Muslim, and they create this divide to control the power, to be in power. In 80s and 90s, we will see that the RSS changed their attitude from societal work to this political power. As a result, we see in the 80s, RSS created this BJP to propagate this concept of Hindu state or the creation of Hindustan. And as a result, we see many communal riots in Gujarat, in many Surat, in Vadodara, in many other places. So during the freedom struggle also, we will see that the RSS didn't join hand with the Congress, but
they join hand with the Britishers. So this Hindu Mahasabha or the Janata Dal or BJP, they are all the political wings. So what I want to say actually, these people, these fundamentalist people, are either Hindu fundamentalists or the Islamic fundamentalists. They wanted to capture the power, and for that they use the religion. That's why we will see now the, the new funda of CA and NRC. But India, we must remind that India is not a theocratic state, but it is a secular state. So it definitely create obstacle in the path of these things. So we also have a report once that Al Qaeda, in Al Qaeda general meeting, a report was published in Pakistan. If we go through that report, we will see that it is similar to the report of RSS and Maoism. So this all fundamentalists are same, and we must oppose this fundamentalism. Religion always teach or taught us good things: love, compassion, compatibility, tolerance. But these fundamentalists, in the name of the religion, distorted everything. So Anekanta is the ethos, but these fundamentalists spoke freeing the country in the name of the this religion, but actually they are destroying our secular spirit, which is not good for India. So this Anikantavada, actually we will see it भिन्न भिन्न तरह के जो डिस्कोर्स है उसको जो एसिमिलेशन करना, वो जो अपोजिंग पेयर्स है, फोर्स है, उसको एसिमुलेट करके एक जगह रखना, यही अनेकांतवाद की सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी प्रिंसिपल्स है। और हम लोग क्योंकि भारतवर्ष में रहते हैं, हम लोग ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, जहां पर भिन्न जाति के, भिन्न धर्म के अनुयायी लोग रहते हैं। हम लोग कई सालों, हजारों सालों से एक साथ रह रहे हैं। हून आए सक आए, मुगल आए, सब आए, पर फिर भी हम लोग एक साथ इस मातृभूमि में हम लोग आज तक टिके हुए हैं, कोई भी हमें हिला नहीं सका है। यहाँ पर मुझे एक लाइन रविंद्रनाथ टैगोर की याद आती है, जहां वो बोलते हैं, सक हून मुगल पठान एक दे होलोलीन, मीन्स इट इज अ लैंड ऑफ assimilation. It is a body where everything assimilate, and this is the land of India. Excellent, Namrata. I have two more questions. One, you have already आपने थोड़ा डिस्कस कर लिए हैं, ये जो माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, एक्चुअली पीपल आर टॉकिंग अबाउट दैट। लोगों ने इसके बारे में बात बहुत ही करते हैं। अल्पसंख्यक और बहुत संख्यक मौलवाद, ये दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, और उसका निहितार्थ क्या है? What is the significance of this difference? What is the difference between these two? मैं डिफरेंस के पहले हाँ, ये दोनों की समानता बोलना चाहूंगी। दोनों में जो चीज कॉमन है, कॉमन टू बोथ, इज द क्लोर पॉलिसी and the tension being overwhelmed by other religions. This minority community is in constant fear of the claim of the majority community. That is the claim of the only one true religion, which brings intolerance and create cleavages between this minority and majority religion. So it also leads to the conversion of minority into majority, which resulted in bloodshed, violence, terrorism, which is against any society. Like we have this sort of example in Stalin regime, in Hitler regime. So this majority religion always try to exploit this minority religion. Here I try to explain this with two examples. Number one, in 1978, the case of Sahabanu, the famous case of Sahabanu, where a 62-year-old woman was divorced by her husband,
And in order to secure maintenance, she approached to the Supreme Court under section 125 of the Criminal Procedure Code. And the judgment of the Supreme Court was in her favor. उसके फेवर में जजमेंट होने के बाद भी क्या हुआ, कुछ जो ग्रुप जो शिक्षित ग्रुप थे, शिक्षित गोष्ठी थी मुसलमानों के अंदर, जो वमन ग्रुप थी, जो शिक्षित थी, जो इन बातों को समझती थी, उन लोगों ने इनको सपोर्ट किया। बट जिन लोग फंडामेंटलिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, एजिटेशन किया, और साहबानों को यहां तक इस तरीके से उन पर दबाव डाला कि फाइनली उनको अपने इस केस को उठा लेना पड़ा। He was forced to withdraw her claim. अब इसको जो हिंदू मेजॉरिटी है वो क्या बोलते हैं, हिंदू राइट ने क्या किया, इस मौके का फायदा उठाया और उन्होंने कहा, they sought to portray that the entire Muslim community as backward and opposed to women's right. अब अगर हम लोग इसी चीज को अब हिंदू फंडामेंटलिज्म के नजरिया से देखें और एक इंस्टेंस को, the same Hindu fundamental force, very recently, in the sense in past few decades, we will see they supported Sati Pratha, where the public burning of a young woman of 18 years old, Roop Kanwar, at a grand festival in Rajasthan. They are also silent about the dowry cases in Gujarat and in other places. So why were Hindu fundamentalists who remain silent on the injustice towards Hindu women making hue and cry about the Sahabanu case? So this is the contradiction. जहां पर ये आप बोलते हैं कि हम वमन के अपलिफ्टमेंट का बात करते हैं, वमन के राइट का बात करते हैं, दूसरे जो हैं वो वमन को नीचा दिखाना चाहता है, वो वमन को आगे नहीं बढ़ना देना चाहते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं, आप अगर सही हैं तो आप क्या कर रहे हैं। दिस ऑल्सो द सेम सिचुएशन इज वाइस वर्सा। सो ये जो ऑपोजिंग फोर्स है, इसको चाहिए कि ये एक दूसरे को सुने, एक दूसरे को जाने, और एक दूसरे में जो अच्छी चीजें हैं उन लोगों को अपने अंदर समाएं, उन चीजों को ग्रहण करें, ना कि एक दूसरे की खामियां को कुरेद के सोसाइटी को और भी ज्यादा विषाक्त कर दे। सो यही है मेजर डिफरेंस बिटवीन द नेचर ऑफ मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी फंडामेंटलिज्म। और उसके इम्प्लीकेशंस के लिए मैंने ये दोनों केस आपको बताया कि किस तरह से ये दोनों अपने फायदा के लिए अपना चीज यूज करते हैं। एंड नाउ मैं पूछना चाहता हूं कि आपने, और दो सवाल है मेरे पास। एक है कि आपने पेट्रियार्की के खिलाफ बहुत कुछ बोले हैं, तो ठीक है, सच है कि वो फंडामेंटलिस्ट्स, ऑल ऑफ देम आर पेट्रियार्कल बाय नेचर। तो मैं जानना चाहता हूं कि ये जो जैन धर्म की अनेकांतवाद, ये जो दर्शन है, ये पेट्रियार्की के खिलाफ, इसमें कुछ सब्सटेंस, कुछ शिक्षा इसमें है क्या? नारी के स्त्री स्वाधीनता के बारे में माने क्या हम अनेकांतवाद को जोड़ सकते हैं? देखिए, ये एक फलसफा है, एक ये दर्शन है अनेकांतवाद। तो इसमें बार बार यही बोला गया है, टॉलरेंस टुवर्ड्स अदर्स, दूसरे की व्यू पॉइंट को जानना, समझना, और उसको अगर सही रहे तो उसको अपनाना, वो जरूरी है। अगर ये चीज हो तो ऑटोमेटिकली जो वमन के बारे में जो आप बोल रहे हैं कि वमन को किस तरह से इसमें जोड़ा जा सकता है, तो ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि वमन
आदमी और औरत सोसाइटी के दो चक्के हैं, एक दूसरे के बिना दे आर इंटरडिपेंडेंट एंड इंटर रिलेटेड। अगर दोनों की समस्याओं को समझे, दोनों की असुविधाओं को समझे और उसे सॉल्व करने की कोशिश करें, तो ये फंडामेंटलिज्म का क्वेश्चन ही रेज नहीं होगा। पर इसमें मैं एक चीज जोड़ना चाहूंगी, जहां तक अनेकांतवाद की बात है कि ये किस तरह फंडामेंटलिज्म को रोक सकता है या इसको एज अ रेमेडी हम लोग यूज कर सकते हैं, तो इसके कई पहलुओं को हम लोग को जानने की जरूरत है। पहली, अनेकांतवाद is the acceptance of alternative in social, political, cultural and family life. An alternative opinion is always being respected. सपोज आज जो हम पैट्रियार्कल सोसाइटी की बात कर रहे हैं, वहां क्या होता है? वहां आदमी प्राधान्य पाता है, मेल इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड मेल विल टेक द डिसीजन। पर अगर हम लोग ऑल्टरनेटिव ओपिनियन, दैट इज द ओपिनियन ऑफ द वुमन, अगर उसको भी एक्सेप्ट करे और उसको रेस्पेक्ट करे, तो ये प्रॉब्लम ग्रो नहीं करेगी। ये अनेकांतवाद में ही निहित है। It basically encourage tolerance and the acceptance of alternative as reality and expectation to lead a good life gives an orientation to cultural thinking which is based on tolerance and others opinion. This is the most important thing. If we accept this in our life, then all the problem will be solved. A tolerant society, as we know, is always based on the acceptance of agreement and differences. Like religion having this preached in a ordinary colloquial language, which give access to the literature and to all sorts of without any sorts of elitism. So this is again अनिकांत दृष्टि of Jainism. कई जैसे पहले हम लोग जब वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जब पढ़ते हैं, वहां हम लोगों ने देखा है कि जब मेडिएवल पीरियड में जब चर्च का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तब क्या हुआ था, उन लोगों ने बोला था बाइबल पढ़ने का राइट खाली पोप के पास है, पोप छोड़ के कोई नहीं पढ़ सकेगा, अगर कोई पढ़ेगा तो वो पाप होगा। तो ये जो चीजें हैं, ये हरदम अनेकांतवाद इसको अपोज करते हैं, एनी सॉर्ट ऑफ एलिटिज्म, कि धर्म है सबके लिए, सब उसको पढ़ सकते हैं, सब उसको फॉलो कर सकते हैं। अगर कोई बोले हमारा रिलीजन सर्वोपरि है, सबसे अच्छा है, इसे खाली कुछ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के अंडर में रहेगा, कंट्रोल में रहेगा, यही है फंडामेंटलिज्म, जो अनेकांतवाद पूरी तरह से इसको रिजेक्ट करता है। एवरी रिलीजन, चाहे कोई भी रिलीजन हो, इट कवर्स एवरी एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ, राइट फ्रॉम द बर्थ to the life lived and death and beyond that. So this tends to exclusiveness of the religion, with the assertion that without lived experience you will not understand us, our cultural system. A step further is a denial of other religion and condemn of them as a false. So one closes the window to other religion and making the communication difficult. हम लोग जो ये चीज बोलते हैं कि हमारे रिलीजन में सब कुछ है, जन्म से लेके लाइफ कैसे लीड करेंगे, मरने के बाद क्या होगा, मरने के टाइम क्या होगा, सब कुछ है। इसीलिए हम लोग जो रिलीजन फॉलो कर रहे हैं वो एक्सक्लूसिव है और किसी रिलीजन में नहीं है। इसीलिए हम लोगों को समझना ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। जैसे ही हम लोग ये बोलते हैं, इसका मतलब क्या, हम लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं दूसरे की आवाज सुनने के लिए, हम लोग अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं ताकि दूसरे की आवाज ना आ सके, जिससे ये कम्युनिकेशन और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। सो अनेकांतवाद हेल्प्स इन मिनिमाइजिंग वायलेंस एंड पोजेशन। जहां आज हम लोग ये मेटेरियलिस्टिक सोसाइटी में इस होड़ में रहते हैं, कौन कितना अपने पास कितना धन संपत्ति, कितना वेल्थ, कौन कितना अर्जन कर सके, ये करते करते हम लोग क्या करते हैं, कई जनों को चोट पहुंचाते हैं। हम लोग दूसरे के प्रति सहानुभूति नहीं रखते हैं, हम लोग धीरे धीरे वैल्यूज कम होता जाता है। जहां इस सोचने समझने की शक्ति, दूसरे को एक्सेप्ट करने की शक्ति जहां कम होने लगती है, वहीं फंडामेंटलिज्म का जन्म होता है। सो इन द पोस्ट कोल्ड वॉर अगर हम लोग देखें, हंटिंगटन के अगर हम लोग क्लास ऑफ सिविलाइजेशन को अगर हम पढ़ें, तो उन्होंने उसमें ही गिव द पिक्चर ऑफ फ्रैक्चर्ड पिक्चर ऑफ फ्रैक्चर्ड ग्लोब। फ्रैक्चर्ड कैसे?
with about 9 major religious zones with their boundaries at faulty lines. He uses culture and religion synonymously. And his entire thesis is based on the exclusiveness of religion and that the fault lines being the perpetual source of conflict. So, this is the backdrop against which we are placing Anikantavada as a philosophy of interfaith polylogue for understanding what difference means. Like example, हम लोगों का जो जनेऊ का जो रिचुअल होता है, सब मोर और लेस जितने भी मेजर रिलीजन है सब में होता है, जिसे हम लोग सर्कमसिशन बोलते हैं। ज्यूइश में भी होता है, मुस्लिम में भी होता है, बैप्टिज्म इन क्रिश्चियनिटी में भी होता है, जिसे हम लोग उपनयन इन हिंदूज में बोलते हैं। सो इट शोज that there are differences among these religious rites, yet the ideological threads bind them all in agreement. And what was that? That the child, the initiated child, is ritually taken into the fold of religion. In the social presence is a common message underlying these different rituals. So we wanted to understand religion by comparing similarities and differences to make it, understandable to other persons and religion to carry the message of interfaith amity, and we need to open a polylogue at time with others. Acharya Mahapragya ji, he has taken this term Anekanta from the confines of Jain text and presented as a universal message of peace and harmony. He gave it a very practical sense to it, to be practiced in practical life, like in home life, in social life, in international relations. Giving respect, full hearing to other opinions, and look for overlap helped by this polylogue, which led to the quest for peace and dignity with dignity and love. So he had argued that ordinary people as well as the leader in public tried to cultivate this Anikanta discipline. Once in a lighter when he actually said our former president, Professor Abul Kalam in a very lighter way, if he could invent a, within quotes, peace missile, what he meant that like a peace missile within quote, Anikanta Drishti could break through, rather overcome all the barriers to peace and progress. So, addressing this growing problem of fundamentalism in our society, the significance of Anikantavada is important, and the violence and fundamentalism is always rooted in this dogmatic but mistaken knowledge games that fail to recognize other legitimate perspectives. And Anikantavad provides this alternative epistemology to support the dialogue among the people to their diverse viewpoints, to different viewpoints. Such epistemology allows respect for the views of others. And it should not be confused with relativism because it does not mean that all views are equal, because it allowed the thinkers to maintain the validity of Jain view of reality and to respectfully criticize the views of others and their own views also in terms of weaknesses. And such epistemological respect for other views has a great potential to eliminate this violence argument between ideological opponents by methodological both about disarming and pursuing them. सो दिस एपिस्टेमोलॉजिकल जो ये आध्यात्मिक जो ये अस्त्र है अनिकांतवाद, जो हम लोगों को ये जो भिन्न भिन्न जो दृष्टिकोण को अपनाने की जो बार बार बातें कहते हैं, वो एक्चुअली इट्स अप्रोच टू रियलिटी एंड विदाउट falling into the trap of extreme moral relativism or religious exclusivism. So, reflecting upon this multi-dimensional significance of Anikantavada in day-to-day life, actually this ये अनेकांतवाद हम लोगों को ये रिलेट करने के हम लोग कर सकते हैं इससे कि किस तरह एक सेक्युलर स्टेट फंक्शन करे, किस तरह से हम लोग न्यूट्रल रह के दूसरे को रेस्पेक्ट दे के हम लोग किस तरह सेक्युलरिज्म को और भी बढ़ावा दे सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पर एक चीज जो हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में कंट्राडिक्शन है
एक तरफ कॉन्स्टिट्यूशन इन आर्टिकल 14 हम लोग इक्वालिटी की बात करते हैं, और दूसरे तरफ उसी कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोग देखते हैं रिजर्वेशन फॉर द अदर कम्युनिटी ग्रुप। तो ये एक हम लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन में भी कंट्राडिक्शन है जिसे हमें सॉल्व करने की जरूरत है। But Anikanta Vada, we will say it is not only a philosophy, it is a manual for good life. And it always, encourage us for the for to open our mind and discourage us from adapting the absolute thinking, and which helps in turn to overcome our egoistic thought, and usually which is usually originated in an environment where one considered oneself superior to the others. So this one-sided fanatical views, when joined with the political ideology, we see the example in our history, in our past, in future also, and the present also. In future, if this country as current system will remain, we'll see in future and even in the present, we'll see this led to terrible violence. This commitment to ensuring this required epistemological respect to all viewpoint. This respect is based on this philosophy or the nature of reality itself. So we see that this is a method of reconciling the opposite and making people attractive for the persons for holding opposing views to enter into a dialogue and negotiate their differences, and thus avoid violent confrontation. This right faith always implies this non absolutistic attitude, because perverted faith means the absolutism where one thing is right. So we have to adopt this the attitude of right faith. Though our society we know is a mixture of advanced technology and backward psychology, and we are witnessing this blind, barbaric, religious fundamentalism, communalism at a mad display of anti secular forces, which reflect the disturbed mental state of the peoples, and which has no limit of fanatism. In the name of religion, this creed of intolerance is pursued and nurtured. Like we know the fundamentalist group like Laskar-e-Jabbar in Kashmir, which earlier promoted the coercive dictate for the dress code for the women. So this philosophy actually it has an innate sense of tolerance for other religious path, and searching for the this tolerance is regarded as a reflex of the religious deep preoccupation with ahimsa. Though theoretically this anekanta will establish peaceful coexistence, but as we know nowadays everything revolves around this power game and all, and how to capture it. So in presently we will see that this anekantavad will help you a lot, though it is very tough, but we have to try it to inculcate in our inner self, in our mind, in our thought. So, regarding communalism and fundamentalism, as we know, these are the two social phenomena where we will see the communalism is very close to fundamentalism. In the sense, communalism means this allegiance to one's own ethnic group rather than to the wider society, and it starts when the best part of the teaching is converted and observed while performing these rituals, which leads to conflict. And fundamentalism is perverted form of religion. So the challenges of these forces have become acute since 80s, but it goes into the deep roots in pre-British India, as I've already said. And early 20th century, we saw the emergence of the groups like Muslim League in 1906, the Hindu Mahasabha in 1907, and RSS in 1945. And further, जो सोने पे सुहागा is the divide and rule policy of British, which combined this emerging communal politics, which resulted in the partition of our country at the time of transfer of power. And during this partition in 47, we see the worst, communal violence in the history of our subcontinent. And rightly, if we see after independence, we have seen this example during the
rights of 1985, then Ayodhya issue in 92, and demolition of Babri Masjid. They are the few examples of this, communal rights and all. So, in if you have any question, you can ask. Then I will conclude. um, मेरा आखिरी सवाल है, although you have already discussed about this, but still very briefly if you can say a few words about this. मेरा आखिरी सवाल है कि अ, आज हमारे देश, हमारे वतन, मुल्क, our country, जो सेकुलर स्टेट खतरे में है, अ, मैंने देखा है कि हजारों इंसान अभी मौलवाद की प्रभाव का अंदर सोचने लगे हैं. Many people, many Hindu people, they hate Muslims. That is called Islamophobia. And also, we know that many Muslims are unhappy when Muhammad Akhlaq was killed for allegedly keeping beef in his refrigerator. There are plenty of examples. So, in this critical situation, अनेकांतवाद में कुछ सिद्धांतों जरूर होगी. क्या हम लोग इस सिद्धांतों को इस्तेमाल कर सकते हैं? कैन वी यूज सर्टेन टीचिंग्स so that we can free our capitalism? ये मौलवाद से हमें मुक्ति मिले, क्या मिल सकता है थ्रू अनेकांतवाद? Are you hopeful about this? Are you optimistic? Do you suggest any concrete things about that? That is my आखिरी सवाल, my last question. Definitely, sir. If we inculcate among us the attitude of listening to others, आज ये जो जितने भी ये जो हिंदू मुस्लिम डिवाइड ये क्यों कर पा रहे हैं? आज जो पॉलिटिकल जो लीडर्स हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, वो डिवाइड क्यों कर पा रहे हैं एक आदमी से दूसरे धर्म के नाम पे? उसका एक ही कारण है कि हम लोग दूसरे रिलीजन के अच्छाई को ग्रहण करने के उपयुक्त नहीं है या उसे ग्रहण करना नहीं चाहते हैं. अगर हम लोग अपने धर्म के साथ-साथ दूसरे धर्म के अच्छी चीज़ों को भी अपनाने की कोशिश करें, उसे सुनें, उसे जानने की कोशिश करें, तो ये फंडामेंटलिज़्म जड़ से खत्म हो जाएगा, जो कि होना बहुत मुश्किल है. पर फिर भी अगर हम लोग ये अनेकांतवाद की दृष्टि को अपनाएँ, तो ये काफ़ी हद तक संभव है. बिकॉज़ रिलिजन इज़ ऑलवेज़ एन इवॉल्विंग फेनोमेना which changes and accept others. Anekanta this Anekanta Drishti, it encourages the Catholicity of religions. Accept it accept the differences as a way of life. Life has its own compulsions which religions never deny. Like the Vedic Hinduism and Puranic Hinduism that is in practice today are not same. The Arab Islam and the Indian Islam are not same. Jainism at the yore and the Jainism today are not same. So look at and respect the rules, the similarities and differences which coexist meaningfully. This is Anekanta Drishti. And the polylogue is an instrument for mutual understanding and appreciation. And understanding the differences is the other name of tolerance and the polylogue as the method. So अगर हम लोग
इस डिफरेंसेस, ये एग्रीमेंट, ये दोनों अगर साथ में लेके सोचे देखे, अगर हम लोग एक डायलॉग में आए, एक कंटिन्यूअस हम लोग में वार्तालाप चलता रहे, कम्युनिकेशन होता रहे, तो ये फंडामेंटलिज्म का जो बीज है ये धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बोलते हैं हमारा ही धर्म सबसे सर्वोपरि है, वी आर द फाइनल, हम लोगों को दूसरे की नहीं सुननी है। ये जो हम लोग चीज अपनाते हैं कि वी अलोन एग्जिस्ट, अदर आर नथिंग, अगर हम लोग इस चीज को, अपने इस इगोइस्टिक एटीट्यूड को छोड़ दें तो ये समस्या खत्म हो जाएगी। हम लोग अगर ये सोचे हमारे धर्म में ये है, उस धर्म में ये चीज है जो हमारे धर्म में अपनाना चाहिए। जो मैंने अभी कहा, जो पहले जो वैदिक हिंदुइज्म है, अभी का हिंदुइज्म में बहुत डिफरेंस है। वो जो रिचुअल्स करते थे, अभी वो सब रिचुअल्स फॉलो नहीं होता है। वो धीरे धीरे चेंजेस, उसमें परिवर्तन कैसे आया, हम लोग अलग दूसरे रिलीजियन से इन्फ्लुएंस्ड हुए, वो ऑटोमेटिकली हम लोग के सिस्टम में, हम लोग के सोशल पॉलिटिकल लाइफ में अपने आप एसिमिलेशन होता रहा। और इस एसिमिलेशन को ये नेचुरल सोच के हम लोग अगर प्रोग्रेस करें तो हमारी लाइफ और अच्छी और सहज हो जाएगी और फंडामेंटलिज्म की कोई जगह नहीं रहेगी। हम लोग एक चीज पे विश्वास करते हैं, वी इंडियंस, वासुदेव कुटुंबकम, मीन्स द वर्ल्ड इज लाइक अ फैमिली, इट कैन बी रियलाइज्ड only through a synergy of both. So identity come difference and unity come diversity is the important thing. Like gold कभी भी पारा नहीं बन सकता, gold is not mercury and mercury is not gold, but they are, though they are different but they are identical. So अगर हम लोग इस चीज को समझ ले, जान ले, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इस जो हम इसको कर्स बोले, अभिशाप बोले, फंडामेंटलिज्म का जो ये अभिशाप है, उससे हम लोग मुक्ति पा सकते हैं। जो एक कौम को दूसरे कौम से लड़ा देता है, भाई भाई को लड़ा देता है, जो इतने सालों से हम लोग हिंदू मुस्लिम जो साथ साथ रह रहे हैं, तो छोटी सी पॉलिटिकल अपने ईगो को, पॉलिटिकल गोल को सेटिस्फाई करने के लिए ये लोग जो ये पाथ जो अपनाते हैं, ये ह्यूमैनिटी के लिए, सोसाइटी के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द यूनिवर्स और से द प्लैनेट अर्थ, ये बहुत डेट्रीमेंटल है, बिकॉज इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर। और इसके विरुद्ध में जाने से ही हम लोगों को उसका फल भोगना पड़ता है, पड़ता रहेगा। और अगर हम लोग इससे बाज नहीं आए तो आगे भी इसके बहुत सारे कुफल हम लोगों को भोगनी पड़ेगी। Thank you, Namrata, Dr. Namrata Kothari. Thank you sir, so much. for I giving feel us so this opportunity. proud. I feel so proud that you were my student when I was young at that stage in Scottish Church College. You have explained the principles of Anekantavad in a very brilliant way, and you have connected it with contemporary politics, contemporary problems of fundamentalism जो हमारे देश अभी फेस कर रहा है, और मौलवाद के जो खतरा आपने बहुत अच्छे तरीके से आपने एक्सप्लेन कर चुके हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। Okay, and now I request Orithro to please take up. We are incredibly thankful to Professor Kothari for the enumerating lecture, which raised several important as well as very key issues, adding up extensively to the existing body of knowledge. The talk will, in a way, further lay greater emphasis upon the reading and understanding of Anagantarvad and Maulavad, and through connecting it with contemporary Indian politics, as well as will be an asset of budding scholars and students of the field. The several intricate as well as critical junctures in today's talk will also help a vast section of the keen yet non-academic audience, to learn and extend their knowledge about the same due to the very lucid nature of its presentation. So once again, on the behalf of Spartacus, we thank to Professor Kothari for accepting our invitations and for making this event memorable. So thank you, ma'am. Thank you very much. And now, Professor, Orithro, is there any question in YouTube? Unfortunately, no, there is no question. Okay. There is some comment. Okay. I think it will be uploaded
within 3-4 days in YouTube. within 2 or 3 days in YouTube. Okay. And when it will be uploaded, we will share the link of that uploaded version in our description. Okay, thank you. Thank you, sir.